Hello viewers, today we have a exciting episodes on gallstones. Our speaker Dr. Sushant is with us. He is a consultant general laparoscopic surgeon at Aastha Hospital. He is sharing his insights and expertise on gallstones. Myself is Vivek and I am taking to this sessions. Dr. Sushant, tell me about us to our viewers. Hello friends, myself Dr. Sushant Verma. I am a general and laparoscopic surgeon available at Aastha Hospital. Today we will be talking about a common disease, gallbladder stone disease. About yourself, how do you select a general surgery and laparoscopic surgery? And what difference between the general surgery and laparoscopic surgery? So basically in our training, I have been trained for about 15 years. I did my training in early 2010. So at that time, laparoscopic surgery was a bit common, but not that common as it is today. So basically in general surgery, we used to do big incisions. The surgery time is more, the patient recovery time is more, the hospital stay of the patient is more because the incisions, they are a big incisions and the surgery itself takes a long time and the recovery also takes a long time. So with the invention of laparoscopy, small holes are being made in the abdomen, in the tummy, in whatever area the disease of the patient is. And through that, we introduce the camera, the telescopes, the instrument of the laparoscopes. The surgery is performed and the recovery for the patient is much quicker as compared to general surgery. Okay, so today's topic is gallstone diseases. So what is gallstone diseases? Gallstone disease is a very common disease. Basically, there is an organ called as gallbladder, which is located in the right side of our abdomen beneath the liver. The function of gallbladder is to store excess amount of bile juice, which is then used to digest food whenever we have our meals. So due to some pathology of gallbladder organ, the formation of stones, it becomes due to excess of cholesterol or due to some infections, which causes the formation of stones. Then these stones can produce symptoms which will be discussed. Okay, so what are the symptoms? How can the people recognize he had a gallstones? So basically at the start of the formation of stones, patient may remain asymptomatic or they may have only mild discomfort. Many of the patients confuse the symptoms of stone due to common gas problem. ये हमें गैस प्रॉब्लम है, हमें एसिडिटी है, तो इस वजह से वो ट्रीटमेंट लेने में भी देर रहती है. कई बार कॉमन पेशेंट को लगता है कि हम अब ठीक हो गए हैं, बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, उनके बड़े होने की प्रोसेस, उनके मल्टीप्लाई होने की प्रोसेस साइलेंटली अंदर चलती रहती है. बट जब सिम्टम्स आते हैं तो वो डेंजरस सिम्टम्स भी हो सकते हैं. कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट को रहते हैं वो रहते हैं कि हम कुछ भी हैवी खाना खाते हैं या फैटी खाना खाते हैं या हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो अपर एब्डोमेन में पेट के ऊपर हिस्से में उन्हें भारीपन की समस्या महसूस होती है. वो इसलिए होती है क्योंकि जो गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बन चुका है, गॉल ब्लैडर अपने आप में ऑर्गन जो है वो ख़राब हो चुका है. अब किसी भी चीज़ जो ख़राब हो गई है उसको अगर काम करना पड़ेगा तो वो ठीक से काम भी नहीं करेगी, और अगर काम करेगी तो बॉडी में ऐसे सिग्नल भेजेगी कि बॉडी को लगेगा कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है. तो वो सिग्नल्स इसी तरह के होते हैं कि दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, भारीपन हो रहा है. ये तो कॉमन सिम्टम्स हो गए. बाकी गॉल स्टोन डिजीज़ के डेंजरस सिम्टम्स भी होते हैं या साइंस होते हैं जिसमें पेशेंट को अनबेरेबल दर्द हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, पैनक्रियाज की सूजन हो जाए, पेट फूल जाए, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एपिसोड्स आ जाए. तो ये इसके डेंजरस सिम्टम्स में आता है. Okay, a lot more people walk down for and searching for the desi इलाज. Is it possible to have an alternate इलाज? देखिए हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी उनको पता होता है, दे ऑलरेडी नो दैट दे हैव गॉलस्टोन डिजीज, गॉलब्लैडर स्टोन डिजीज. Okay, so timely intervention is more important. यस, टाइमली इंटरवेंशन. So tell us, Dr. Sushant, what are the risks involved in it? So if you are suggesting a surgery, लेप्रोस्कोपी डेवलप हुई तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी है जो लेप्रोस्कोपी से करी जाती है. इसमें पेशेंट के छोटे छोटे होल्स होते हैं एब्डोमेन पे, टमी के ऊपर,
और पूरी ऑर्गन को पत्थर सहित जड़ से पूरा उसको हटा दिया जाता है। Okay, so you have outlined the patient can walk down, say what, within 48 hours. 24 to 48 आवर्स 24 to 48. अपना पेशेंट अपना चलना फिरना शुरू कर सकता है, कर देता है। धीरे धीरे हम खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। रिकवरी जो रहती है वो जल्दी हो जाती है। और एक चीज़ ये है कि आगे जाके लाइफ नॉर्मल है। कई लोगों को ये ध्यान में रहता है या ये डाउट रहता है कि हम तो जी कुछ खा ही नहीं पाएंगे ऑपरेशन के बाद। वो कुछ चीज़ें ना पुरानी कहीं से हमने सुन के पढ़ के। Okay, so I think here the outline all the aspects of gallstone diseases, its risk, its alternatives and benefits. I think our viewers will immensely benefit of this informative and as well as a beneficiary discussions on this subject. So please continue watching our podcast. Hello, Astha.